और हनुमान वॉरियर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का यानी बैटिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और पहली गेंद लेकर इस वक्त श्रवण नन्हे गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए लेग स्पिन गेंदबाजी पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ दर्शन अपना खाता खोल चुके हैं। पहले मैच में दर्शन ने शतक झड़ा था, उसके बाद दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए और जल्दी आउट हो गए थे पिछले मैच में और इस बीच तीसरे मैच में पहली गेंद पर छक्का इस वक्त लगाकर शुरुआत कर चुके हैं और इस बीच श्रवण फुल टॉस गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, लेग स्पिन गेंदबाजी और गेंद सीधे बल्लेबाज के पैर पर टकराई, रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। जीएसबी समाज के नन्हे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन प्रदर्शन जो कि यहाँ पर जारी है और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, फ्लाइटेड फुल टॉस पुल्स एंड इज गॉट द डिस्टेंस 12 विदाउट लॉस, 12 रन बन चुके हैं और एफर्टलेसली गेंद को इस वक्त उछाल दिया था बल्लेबाज दर्शन ने। देखिए यहाँ पर किस तरह से, हैव अ लुक एट दिस इन द एलईडी स्क्रीन, जस्ट लव दैट वन हैंडसमली एंड ही जस्ट गॉट दैट वन फॉर अ मैक्सिमम और श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, रन लंबे रनअप के जरिए पुल्स एंड वंस अगेन इज गॉट द डिस्टेंस। 3 छक्के 4 गेंदों में गिर चुके हैं और 18 रनों पर स्कोर बोर्ड यहाँ पर पहुंच चुका है। 18 ऑन द बोर्ड इन द ओवर नंबर फर्स्ट, स्टार्टेड जे शॉट वाले गो और गेंदबाज श्रवण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथों पर द विकेट, तेज गेंद इस बार पल्स 6 नंबर 4, इस बार क्विकर गेंद थी और इस क्विकर गेंद पर इस वक्त गेंद को उछाल कर खेलने में सफल वानिश लॉन्ग से बाहर छक्के के लिए बल्लेबाज द्वारा। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 24 रनों पर 24 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग, a fantastic start in fact for the batsmen of हनुमान वॉरियर्स और गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद रक्षात्मक तरीके खेल, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल, ही जस्ट कीप्स द स्ट्राइक और स्ट्राइक अपने पास रखने में सफल और गेंद ओवरथ्रो के रूप में इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। 1+4 5 रन एडेड टू द टोटल और इस रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 29 रनों पर 29 विदाउट लॉस ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर, फैंटास्टिक स्टार्ट फॉर हनुमान वॉरियर्स और इस वक्त अंतिम गेंद पर सिंगल रहने के बाद दर्शन स्ट्राइक अपने पास रख चुके हैं और इस बीच गेंदबाज अनिकेत गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, पहली गेंद लॉफ्टेड 6 रन्स और बिग स्ट्रोक्स केम फ्रॉम द बैट ऑफ दर्शन, 35 ऑन द बोर्ड, यट टू लूज एनी विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर और जहां तक का सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो अनिकेत अपनी पहली गेंद पर छक्का प्रदान कर चुके हैं। मैच नंबर 6 सब जूनियर विभाग में इस वक्त खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट SVT Trophy 2026 which proudly presented by SVT Volunteers Association, Car Street, Mangalore और 35 the score. GSB Volunteers Premier League Season 4 SVT Trophy 2026 is now progressing here. Is bar off the toes and finds the gap as well. Scoreboard is now rising up to 41 now with that 6. स्ट्रोक में ज्यादा रफ्तार नहीं था लेकिन स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। 41 on the board, just a second over in progress और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, अनिकेत गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अंडर फ्लड लाइट्स, ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करती चलती हुई, लॉफ्टेड फ्लैटर वर्जन पर छक्का लग चुका है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, फैंटास्टिक स्ट्राइक वंस अगेन केम द बैट ऑफ दर्शन और जहां तक सवाल है रनों का तो 47 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुके, 47 विदाउट लॉस। अनिकेत lofted again a 6, 50 comes up, 50 comes up for Hanuman Warriors and what a fantastic struck came to the bat of Darshan. शॉर्ट गेंद थी और खड़े खड़े ही गेंद को इस वक्त उछाल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर्ड एंड has got that one for a maximum at last. 53 without loss, just a second over in progress. अनिकेत अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, फुल टॉस अगेन अ 6, 59 छक्कों की बारिश यहां पर करते हुए बल्लेबाज दर्शन और 50 comes up for दर्शन now. फर्स्ट मैच सेंचुरी, दूसरे मैच में जल्दी आउट हो गए थे, तीसरे मैच में
50 रनों का योगदान दे चुके हैं। इस बार रन आउट का खतरा और यहां पर देखना है कि कौन से बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुके हैं। तो इस वक्त बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए केदार और सिंगल्स उड़ाने के प्रयास में इस वक्त ये विकेट यहां पर गिर चुका है केदार का। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो 59 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है। 59 for 1, 2 overs completed. The bowler starts a fresh proceedings from the commentator box end और शौर्या गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए। दर्शन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार ओवर की पहली गेंद। Full toss, pulse and it's got the distance. 65 on the board. 65 for the loss of 1 wicket और निश्चित रूप से छक्कों की बौछार यहां पर लगाते हुए बल्लेबाज दर्शन अब तक 10 छक्के यहां पर जड़ चुके हैं। ऑलरेडी दर्शन स्कोर्ड 10 sixes so far और 60 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए। Again, this time chance and oh, he dropped that one. That wasn't a chance at the extra cover, लेकिन इस गेंद को इस वक्त लपक नहीं पाए गेंदबाज, माफ कीजिए फील्डर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। That was an easiest chance but dropped by the fielder at extra cover just inside the fence. और अगली गेंद ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त बैक टू द बॉलर की दिशा में। बेहतर फील्डिंग गेंदबाज द्वारा शौर्या जो कि गेंदबाजी इस वक्त करते हुए। शौर्या इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अरविंद सामना करने के लिए तैयार। And oh, he dropped that one. He's dropped that one. He's got a bit deflection on at the last moment. लेकिन इस वक्त विकेट कीपर इस गेंद को लपक नहीं पाए और एक और मौका इस वक्त गवाते हुए इस वक्त जीवदान प्राप्त करते हुए अरविंद। और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 66 रनों पर। 66 for 1 now in the over number 3 in progress. शौर्या अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट। फुल टॉस, गेंद को खेल दिया इस वक्त मिड विकेट की दिशा में। बेहतर फील्डिंग थ्रो इस वक्त, लेकिन थ्रो इस वक्त स्टंप्स पर नहीं टकराया और इस बीच बल्लेबाज एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुका है। 67 for 1. Still a ball left in this over. दर्शन back on track is batting on 61 और सपना इस वक्त करने के लिए तैयार। शौर्या की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। शौर्या फुल टॉस, सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल। हल्के से गेंद को पुश कर दिया, रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। दर्शन कीप्स स्ट्राइक एंड 3 overs completed. 68 for 1 after 3 overs. This is the match number 6 of the sub-junior division of this prestigious cricket tournament, SVT Trophy 2026 GSB Volunteers Premier League. Season 4 is now progressing here in this fantastic Canberra High School ground under floodlights. और मैच नंबर 6 में मुकाबला इस वक्त जारी है यहाँ पर गणेशा पैंथर्स और हनुमान वॉरियर्स के बीच। 4 सब जूनियर की टीमें इस सब जूनियर विभाग में जो कि हिस्सा ले रही है। 2 टॉप सीडेड टीमें इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश प्राप्त करेंगे और इस बार गेंद को उछाल दिया 6 रनों के लिए। दर्शन का शोक इस वक्त उनकी टीम की रन की गति को पहुंचा चुका है 74 रनों पर। 74. दर्शन इज नाउ मूविंग अप टू 68 with that 6. नेक्स्ट मॅच टीम श्रीनिवास आणि टीम कटारी विरा दोन्ही टीमांना रजिस्टर करका इनिंग्स ब्रेक का टॉस जाता। Full toss, again swings and again he's got the distance. 80 for 1 and Darshan is now moving up to 73 now with that 6. 74 he is now batting on. Still 10 balls left in the overall calculation in their innings. 10 गेंदें अभी भी बाकी। देखते हैं बचे हुए 10 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए वाइड का इशारा, बिल्कुल सही जजमेंट के साथ गेंद को इस वक्त जाने दिया अपने बल्ले को हवा में उठाते हुए बल्लेबाज दर्शन ने। और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 81 रनों पर। 81 for 1 in the over number 4 in progress. Vignesh left it, again he's got the distance. Scoreboard is now rising up to 87 now with that 6 and Darshan Pai is now moving up to 80 with that 6. और देखना है कि दर्शन इस श्रृंखला में अपना दूसरा शतक यहाँ पर पूरा कर पाते हैं या नहीं। अपने शतक से सिर्फ 20 रन दूर, जस्ट
20 runs far from their victory. Darshan is batting on 80. 9 गेंदें बाकी, 9 balls still left in overall calculation in their innings. गेंदबाज विघ्नेश को टीम के अन्य खिलाड़ी कुछ समझाते हुए, और इस वक्त विघ्नेश तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट. Swings and once again 6 runs. नो बॉल का भी इशारा, छक्का इस वक्त घोषित हो चुका है और स्कोर इस छक्के के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 94 रनों पर. 94 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. नो बॉल थी पिछली गेंद और इस बीच विघ्नेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दर्शन इज नाउ बैटिंग ऑन 86. विघ्नेश in the air and out dropped. Straight forward chance gone in vain. और दर्शन यहां पर इस गेंद पर बाल बच चुके हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था, लेकिन इस कैच को मिड ऑफ पर जो फील्डर थे वो लपक नहीं पाए. और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था, गेंद को खेला था एंड ही ड्रॉप दैट वन. स्ट्रेट फॉरवर्ड चांस गॉन इन वेन. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, पंच एंड 6 रन्स. टीम श्रीनिवास आणि टीम कटारी वीरा का फाइनल कॉल. तुमगेल टीम आदोकोनु एक प्लेयर आनंगे टीम रजिस्टर करका इमिडिएटली मागीर इनिंग्स ब्रेक टॉस जाता. 100 comes up. सहकार करका. 100 comes up for हनुमान वॉरियर्स. और इस बीच दर्शन तैयार. फुल टॉस ऑफ द टोज. इस बार गेंद को मोड़ दिया अंतिम क्षेत्र पर 4 रनों के लिए, और मोड़ा था इस वक्त सिंगल्स के लिए, लेकिन स्क्वायर लेग पर मिसफील्ड होती हुई और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज प्राप्त करते हो. तो दर्शन इस गेंद पर स्ट्राइक अपने पास रख नहीं पाए. ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं. 104 रन बन चुके हैं. दर्शन बैटिंग ऑन 96 इन दिस सिचुएशन. 96 of 22 deliveries scored by Darshan, and he's off the strike now. और गेंदबाज इस वक्त अंतिम ओवर शुरू करते हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार अरविंद. विन्यास. The bowler starts the fresh proceedings from the commentator box end. First ball comes. 104 for the loss of 1 wicket. 5th over starts in their innings. Leg stump se bahar. Starts off with the wide by Vinyas. Scoreboard moving up to 105 now for the loss of 1 wicket. Darshan is at the other end at 96 of just 27 deliveries he scored. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार विन्यास. इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, चूंकि स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 105 रनों पर. 105 द स्कोर स्टेज एट 5 balls left now. और विन्यास एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अरविंद के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. एज एंड जस्ट फेल शॉट ऑफ अ विकेट कीपर एट द लास्ट मोमेंट. और एक और बेहतर गेंद थी, 2 डॉट गेंद है, और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा बैटर अरविंद इस वक्त कुछ हद तक दबाव में यहां पर नजर आते हुए. 2 लगातार डॉट गेंदों को खेलने के बाद विन्यास बॉल्ड आउट, लेग स्टंप अप्रूव्ड एंड अ विकेट लॉस्ट फॉर हनुमान वॉरियर्स. और अरविंद 2 डॉट गेंदे खेलने के बाद दबाव उनके ऊपर था, उस दबाव को झेल नहीं पाए और अगली गेंद पर बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी. हैव अ लुक एट द एलईडी स्क्रीन एंड जस्ट इनसाइड इट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स. His depart, his struggling innings has been came to an end, and second wicket loss for Hanuman Warriors. 3 balls left. अथर्व नए बल्लेबाज. दर्शन दूर से छोड़ पर मौजूद. इस बैटिंग ऑन 96 एट द अदर एंड. दर्शन स्ट्राइक का इस वक्त इंतजार करते हुए. 3 गेंदें बाकी और गेंदबाज विन्यास इस वक्त तैयार. लेग स्टंप से बाहर विकेट कीपर चूके इस वक्त, लेकिन बल्लेबाज को रन नहीं मिलेगा. टीम को मिलेंगे 1 रन. जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट. 106 for the loss of 2 wickets. Still 3 balls left in overall calculation in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार विन्यास. एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा. अपने पेस को वृद्धि करने के प्रयास में लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद इस वक्त फेंक देती है और वाइड इस वक्त घोषित करते हुए अंपायर. 107 नाउ. स्टिल 3 balls लेफ्ट. छोटे कद के खिलाड़ी अथर्व इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, लेकिन काफी प्रतिभाशाली. सेंसेबल और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े. इस लॉस इज विकेट, लेकिन दर्शन इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक. दर्शन स्ट्राइक पर आ चुके हैं. ही इज बैटिंग ऑन 96 नाउ. जस्ट 2 balls लेफ्ट. अब देखना है कि इन बचे हुए 2 गेंदों में क्या दर्शन अपना शतक
पूर्ण कर पाते हैं या नहीं। सीधे बैक टू द बॉलर की दिशा में अथर्व ने गेंद को ढकेला था, रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आखिरकार रनआउट के रूप में पेविलियन वापस लौटते हुए। टीम श्रीनिवासा का फाइनल कॉल तुमगे टीम रजिस्टर कर का फाइनल कॉल। So Darshan batting on 96. Here we go. 2 balls left in the innings. Vinyas. Here he comes. Right arm over the wicket. This time not connected that one properly. Can't got any run. He remains on 96 now. Now last ball left. और देखना है कि इस अंतिम गेंद पर दर्शन अपना शतक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं। और लगातार दूसरा शतक होगा अगर यहाँ पर इस मैच में वो शतक बनाते हैं तो। लगातार नहीं, इस श्रृंखला में दूसरा शतक। Lost it and he's got that one. He's completed the century in his final delivery of the innings. He's remained unbeaten on 102. And the innings is up for Vinayaka Warriors. They finished with 113 for 3 in the stipulated 5 overs, and they set a huge target of 114 for Ganesha Panthers. तो स्टैंडिंग एविएशन इस वक्त मिलता हुआ तालियों के साथ बल्लेबाज दर्शन का इस वक्त उनके खिलाड़ी प्लेयर्स डगआउट में स्वागत करते हुए 102 रनों पर नाबाद रहे। He's not out on 102 and he's just completing his century in the final delivery of his innings. और आता ह्या मॅच जाल्लो तशीची पराक फायनलाक क्वालिफाय जाल्लो 2 टीमांचे अनाउन्समेंट जाता। चारय टीमांना हांगा फ्रंट स्टेजाला येवन तुमगेल ग्रुप फोटो काडका तवळी अनाउन्समेंट केला। शेषाडनी गरुडा टीम येनी चंगनिके दलतीतलोगी सगळे टीम हांगे येवन ग्रुप फोटो काडका। ह्या मॅच जातरी गणेशा पॅन्थर्स आणि हनुमान वॉरियर्स तुम्ही जाल्यार हांगे येवन ग्रुप फोटो काडका। इमिडिएटली मॅच जातरी सीनियर मॅच सुरू जाता। आता टॉस जावचे आसा, ताजे नंतर सब ज्युनियर जाल्ल्या स मॅचाचे मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी हांगा दिवचे आसा। तशीची 3rd आणि 4th पोझिशन आसचे टीमांक शाल घालून सन्मान करून तांकां एक धन्यवाद समर्पण आसा। तुम्ही सक्कड सब ज्युनियर टीम हांगा येवका दलतीतलोगी फर्स्ट एक ग्रुप फोटो काडून घेया। आता श्रीनिवासा आणि कटारीवीरा टीमाचे आयकॉन प्लेयरान वैरी वेदिकेर येवका टॉस जावचे आसा। धन्यवाद। और 114 the target for Ganesha Panthers set by Hanuman Warriors, and they have to score 114 in their stipulated 5 overs. Or Antima League match, the last match of the league stage in the sub junior division, and team Ganesha Panthers have to score 114 runs in their stipulated 30 deliveries, and their innings now going to start within just short while। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर गणेशा पैंथर्स की पारी की शुरुआत होगी। धन्यवाद, थैंक यू। So thank you very much, Gobi, and this is going to be a more interesting game of cricket especially for Hanuman Warriors in this match. They have to get some big victory for win this match. That's full toss, no ball called by umpire, and swings it hard into the deep mid wicket for a maximum. And looks like Darshan might be a little bit tired after that. He's got a century, the 2nd century of this tournament from the bat of Darshan. He scored unbeaten 102, and again he starts with the first over, and here comes next ball, right arm over the wicket. Again he lofted it. The intention is very clear there from Vinyas that he just wanted to go after. He will not going to look out the bowler. He just wanted to look out the ball. You have to deliver that one out of the park. Back to back 2 sixes. Right arm over the wicket again. Off the back foot, 1 more 6. Looks like the chance here for the fielder. Oh, taken! One-handed screamer taken by Abhi in the negation just inside the boundary line. I thought it might be a 1 more 6 here for Vinyas. He's looking for the hat-tricks. It doesn't get hold of that one properly. Tried to pull the ball. No position whatsoever. An excellent catch. Just have a look at it in replay. And even Abhi, after it taking a 6, he's also surprised how the ball is stuck into his hand. And he completed a catch. 13 for 1 without टीम कटारीवीरा टॉस विन जावन फील्डिंग घेतला। V1 is a new batter in Little Master.
Chota Pack Bada Dhamaka is now on strike. Darshan. This time played it to the square of the wicket and it's boundary. Misfield there by the fielder and Vivan is off the mark with the boundary and 17 for 1. And this is going to be very interesting how well they're going to get that huge total, the target which is set by the team Hanuman Warriors. Full toss opportunity for the same fielder. Abhi will go in. Oh, this time he dropped the catch. He taken a tough catch, but he dropped the straightforward catch. Abhi. And Vivan has got a life. He's a lucky man. And the great slogan, fortune favors the brave. Outside the line of off stump and going to be a wide, one more extra. With that extra score, but moves on to 18 for the loss of 1 wicket in the over number first is in progress. 19 correction, 95 needed from 26 balls. Ball, lovely delivery indeed there from Darshan. Good comeback from the bowler's point of view. After that, back-to-back 2-6. He got 1 wicket. Then, of course, 1 drop catches in this particular over. And 5th time in this over. And just outside the line of off stump, well within the reach of the batter. 1 more dot ball. Over number first, which is comes to an end after completion of over number first. It's 19 for loss of 1 wicket. Still long way to go for the team to win this match. Team Ganesha Panthers. After that, this match we need to have the match for the senior categories. Team Srinivasa versus Team Qatari Veeras of the next match. This time caught and bowled. And we won back in the pavilion. He just wanted to go for the pull shot again. Not that much of shot enough for him to go for the pull shot. Pays the penalty for that. 1 more wicket back in the pavilion. Wicket number 2 gone. The bowler Atharva has got a vital breakthrough for his team. The new batter Vaishnav with the jersey number 19 came into bat. Needed some partnership, needed some intelligent cricket here from this for the batter to get that total, which is the big one. This time a chance for the fielder to take the catch. 1 more wicket back in the pavilion. The back-to-back 2 wickets. The wickets are tumbling here. Just have a look at it in the replay. Full toss delivery, low full toss. Tried to get the ball into the square leg. Didn't got enough power in the shot. Pays the penalty for that. So 19 for the loss of 3 wicket. Atharva. Atharva the batter, bowler, and appeal for stumped out. Umpire says not out. Shravan, the little master. This time, let's have a look at the replay. At the right time, the batter drags his back foot. Just survive himself from that stumped out. All we can see that the very, very exciting faces. We can see that they are absolutely enjoying the game of cricket here. And they know that the 3 days of festival of cricket in this beautiful cricket ground, they just wanted to come and enjoy. And festival atmosphere altogether, we can see that not only the cricket is meant for the men's, but even the women's, the ladies are enjoying the game of cricket. Again, 1 more single there. With that single, score moves on to 20 for the loss of 3 wicket in the over number 2nd in progress. 94 needed from 20 balls. Right arm over the wicket balls. Wanted to go for the pull shot, deflected from his leg, and no run scored. This is turning out to be a good over so far. And lovely cute faces we can see in our screen. And here comes the next one. All right, I'm over the wicket. Last time in this over. This time driven straight down the ground and he got the distance.
So with that 6, Koppattam moves on to 26 for the loss of 3 wicket after completion of over number 2. 3 overs remaining, 18 remaining and 88 runs required for the victory. ಹದಿನೆಂಟು ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 88 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೀಮ್ ಗಣೇಶ್ ಫ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೋಡೋ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 88 ರನ್ನನ್ನು ಗಣೇಶ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರಂತ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ which is going to build it the more tougher for the team Ganesh Panthers have to deal with the big shots. Nikhil, second time in this over, away from us. Right arm over the wicket balls. Oh, very close to the off stump in the negation. Misfield there by the wicket keeper and the third man. And they got a boundary for that. Leg by called by umpire, deflected from the leg. And umpire Karthik Prabhu signaled its leg by. With that leg by, Koppattam moves on to 30 on the board. 84 needed for the victory. Slashed straight to the answer. Oh, good attempt by the fielder. The good effort. Abhi, once again, he's a busy customer, isn't it? Third time the ball is coming into his way. The third opportunity to take the catch. We completed one catch in that long off region. Here comes Nikhil again. Right arm over the wicket bounce. Pulls it handsomely into the mid wicket for a maximum. At last, he got the short pitch delivery to pull the ball, and he pulls it very nicely. 37 on the board. Vikash joining the party. Played it high and handsome. Good camera work here from maybe 24/7 channel. A very experienced and quality YouTube channel. Beautifully ball. Keeping a little bit low in the negation. And no chance of any run. Good comeback by Nikhil. 37 for 3. 77 needed from 13 balls. This time a chance for the fielder. No, he won't get that one. But maybe the single there for the batter. With that single, Koppattam moves on to 38 for the loss of 3 wicket. Over number 3 completed. And 2 overs remaining. 76 required for the victory. 38 runs per over the required run rate. It's quite impossible. 38 runs per over. You can get only Arvind, right arm over the wicket. Outside the line of off stump and too far outside the line of off stump, and Koppattam moves on to 39 for the loss of 3 wicket. Again going to be wide, one more extra. With that extra, Koppattam moves on to 40 for the loss of 3 wicket. And 74 needed for the victory. Arvind again bowling away from us. Wide outside the line of off stump and one more wide. The bowler is a little bit struggling to get his line and land. The runs which is very important here. 40 for 3. Ganesh Panthers will not going to bother about the runs, how the runs are coming, but they needed some runs. Arvind again. This time I played it in the air and ball spun and defeat the fielder, and we're going to pick the ball and ample time for the batter to complete the single. With that single, Koppattam moves on to 42 for 3. 11 balls remaining and 72 required for the victory. Arvind again. Short run up. This time played it in the air. Chance of caught and bowled and is taken. One more wicket back in the pavilion. And Shravan, the batter, is back in the pavilion. That looks like now just a 4 minutes left in this game to win this match for Hanuman Warriors.
Arvind picked up a wicket. After that, he got a shackling start with the through wides. Then he bowled a very good line and length. So new batter coming to the middle. Jersey number 26, Shaurya. Shaurya off the back foot, pulls it away down to mid-wicket region and completed a quick single. With that single scored more than to 43 for 4. टीम श्रीनिवास आणि टीम कटारी विराच्या कॅप्टन्सानं एक बडी रजिस्ट्रेशन डेस्काला येऊ का? Right arm over the kitty balls. Played it down to mid-wicket region and it's going to be a boundary. So at last the boundary coming here for the Ganesh Panthers. With that boundary scored moves on to 47 सीनियर for 4. कॅटेगरीच्या चारही टीमाच्या कॅप्टन्सानं रजिस्ट्रेशन डेस्काला येऊ का? एक बडी आत येऊ का? Ganesh Panthers still a long way to go to win this match. 67 needed from 8 balls. Arvind again. Slash it beautifully down to point region, extra cover region for a 6. And with the addition of that 6, Kubad numbers on to 53 on the board. And over number 4 is in progress. The last delivery of the over number 4, the penultimate over. Shaurya will going to take the strike. No ball call by umpire and a chance for the fielder to take that. And of course, there's a no ball, so no question of catch out. One more, 2 more to the total. With that couple of runs, Koban moves on to 55. Free hit delivery. Free hit delivery for the batter. The Vetinsia will going to take the advantage of that free hit delivery. This time he played it in the air and second attempt completed the catch. But it's a free hit delivery. And the celebration is for a short time. And slight a bit of absence of mind from Ritur. He thought he got a wicket, but it's a free hit delivery. No chance of getting out for the free hit delivery. But over completed, 58 needed from last over. 58 needed from last over. It's quite impossible. You cannot get anything in the history of the game to getting 58 in last over. It's highly impossible. So bowler brought in to attack the ball the last over. Pawan, the bowler, will go into bowl the last over. The starts with the dot ball. A lovely line, good line. A very good line there from Pawan. Now 5 balls remaining and 58 runs required for the victory. Short pitch delivery and lifted that one into deep square leg for a maximum. So with that 6, Cooper jumps into 64 on the board. One more 6, and that back-to-back 2 sixes can affect the team Hanuman Warriors because they need to win with the big margin. And back-to-back 2 sixes here. The batter is Shaurya, is justifying his name. Why is a Shaurya? Because I think is the batter hitting the 6. One more wide, the frustration, the pressure now for the bowler after that back-to-back 2 sixes. It's 69 for 4. Pawan. 45 needed from 3. One more loose delivery, full toss. Played it down to deep square leg for a maximum. No ball as well from, no, it's not a no ball. It's a ball is absolutely dropping.
The fair delivery and 6 runs. Vikas is the batter. Again played it. The wicketkeeper missed it, and one more bye called by umpire, and that means just 2 balls remaining in the innings. 39 needed for the victory. Now Shaurya will go in to take the strike. Wide outside the line of leg stump, and one more extra. 77. This is a big over. Lot of extras, some big sixes. Vikas is on strike now. Again, $78 for 4. Now, last delivery of the match. And that's it, victory for the team, and only 1 run, and it's going to be a 5. It may be costly for the team. Wait and see, the run rate will go into comes into play, and that can become costly for the fielding team, Hanuman Warriors. And Hanuman won this match, but wait and see which team will go into qualify for the mega final of the prestigious SVT Trophy 2026 in the sub-junior category.